dignitaries on the dais, my young friends. I must start by saying, first, my very sincere apology for not being able to be with you. I had promised Dr. M.S. Maselkar as well as Mr. Sheshan that I will definitely come. A couple of things came up in Delhi and I had to cancel my travel to Pune. So I'm going to use this video substitute. I know this is not as good as being there because I just saw on the screen thousands of young there, and I know the energy is very different there than on the screen. But I hope you will allow me to say a few words through this media. I do not have words of wisdom. I do not have any specific advice. But I'd like to share with you my own little story, which is to me a story of many in India, which is really India's story. Looking at some of these young people, I can't help but remember my young days. And let me spend 5 minutes telling you a little bit of my background and my story, and then I'll tell you a little bit of what I'm trying to do right now. I was born and raised in a small little village in tribal Orissa. My father had 4th grade education. This little village called Titilagad had no electricity, no running water, no schools, no doctors, no pharmacies, nothing. My mother delivered 8 children. All 8 out of 8 turned out to be mentally healthy, physically healthy, and parents really focused on education for children. This was 1942, almost 70 years ago. The only connection my parents had with Gujarat then was Mahatma Gandhi and Sardar Patel. I remember as a young boy, when Gandhi died, everybody at home had to take a bath as if somebody in the family had died. When Sardar Patel died, my father decided to send me to school in Gujarat. I went to school in Gujarat, then went to college in Baroda, and in 1963 read in a newspaper that President Kennedy has decided to send man onto the moon. I was young, energetic, ignorant, and I decided to go to America. I had no money. Orissa government gave me a loan for my aeroplane ticket, so I took a boat from Mumbai to Genova, took a train from Genova to London, plane from London to New York, and a bus from New York to Chicago. This was 1964. Studied there. I had a girlfriend in India. She came to US in 66, got married, and worked very hard because in those days it was tough. There were very few Indians or people of Indian origin. We missed comfort of friends and family in India. But we had to work hard to build our future because for us, the only way we could go was to go up.
We had fire in the belly and desire to do something different. I was lucky enough to get an opportunity to work on digital communication. In a very short span of time, I invented few things and then built a business. Sold a business in 1979 to Rockwell International, made little bit of money. For a person who never had any money, this was lots of money. And came to Delhi for the first time in 1979. And in Delhi, I tried to call my wife in Chicago, and I could not make a phone call. I tried again, and I couldn't make a phone call. Lot of ignorance and fair amount of arrogance. Said, I'm going to fix this. Then India had 2 million telephones. It used to take 15 years to get a telephone connection. I decided then to work and spend next decade of my life trying to fix telephones in India. I didn't know anybody in Delhi, had no idea of government structures. I went back to Chicago, told my wife, I think I have found a mission for the next decade. So I used to come to Chicago, from Chicago to Delhi once every 2 weeks and hang around in Delhi trying to meet somebody important. Finally, I was told that if I wanted to do something, I must meet Mrs. Gandhi. I didn't know how to meet Mrs. Gandhi. I didn't know anybody. Finally, through someone, they set up a meeting with Mrs. Gandhi for 10 minutes. And at the last minute, I decided to cancel it. I said, if she's really serious, she must give me 1 hour. It was not possible to get an hour with Mrs. Gandhi then. She was the leader of the country, had lots of important things to do, then meet some strange-looking, long-haired, bearded guy who calls himself an engineer. Finally, after 8 months, I got a phone call that she will give you an hour. That's when I met Rajiv Gandhi for the first time. We were just about the same age. And when I gave a presentation to Mrs. Gandhi, he understood a lot of my messages. My message was that we could change the face of India using information and communications technology. I knew how to do it, and we had young talent to do it in India. We don't need anybody's help. We can focus on indigenous development, young Indian talent, rural communication, digital technology, local industry, and in the process we will create thousands of jobs. But I needed $36 million in 36 months and 400 Indian engineers to do it. Government had the vision, and government agreed to take a chance. Started in 80, that was the meeting with Mrs. Gandhi, November of 1980. And it took almost 4 years. In August of 1984, Center for Development of Telematics was set up. Then we hired 400 young engineers like you all, lots of energy, great deal of enthusiasm and commitment to do something unique. It was their energy and political will of the government that really gave us the confidence to move on to build telecom infrastructure for the country. Then unfortunately Mrs. Gandhi died.
Rajiv Gandhi became Prime Minister, and I decided to leave everything in the US, lock, stock and barrel, and moved to to Delhi with my family. I had an opportunity to work with him for almost a decade, and with lots of friends like Ramesh Mashelkar, Dr. C.N.R. Rao, and many others, and had the best time of my life. Rajiv's political will, young engineers' talent, gave us the first rural exchange to connect rural India. We focused on access to telecom as opposed to telephone density. We built huge amount of software talent. I remember days when Infosys had 5 people, Wipro had 8, TCS had 75. We had chairman of GE come, Jack Welch, and I told Jack Welch that I need you to buy some software from us. He wanted to sell engine. We started with very little then, but with focus on local capabilities, trying to solve local problems. We built huge infrastructure over a period of time. We had support from government, from public, lot of energy. This was mid-80s. Just in short span of 25 years, we could go from 2 million telephones to 900 million now. We are a nation of a connected billion. The key is, how do we use this connectivity to do things differently? Today, Indian challenges are diversity, which is our strength, but disparity, which is our problem. Disparity between rich and poor, urban, rural, educated, uneducated. Demography, 550 million young below age of 25. How do we create future for them? And how do you expedite the process of development? I believe we need to use technology, mainly because that's my background. I see everything through technology. To me, technology is a great social leveler, second only to death. There is technology in everything we do. Technology is democratizing force. Take, for example, IT, information technology. It brings about openness, accessibility, connectivity, networking, democratization, decentralization, and as a result, social transformation. The key challenge for us as a nation now is to really understand the window of opportunity, build strong institutions, make use of young talent and technology to really look at the bottom of the pyramid. We have 400 million below poverty line. We have 300 million illiterates. How do we really use technology to keep this growth going? If we continue to grow at the rate of 8 to 9% or 10% a year for next 20 years, I'm confident that we will be able to solve the problems of poverty. Without growth, there is no future for us. But with growth, we need sensitivity to inclusive growth. We need ability to solve our problems Indian ways. The Western model based on consumption is not going to be desirable, scalable, or affordable in India. We need affordable, scalable, sustainable solutions. So I'm spending a lot of my time now on democratization of information, creating information highways of tomorrow to connect our 250,000 panchayats, connect all our universities, libraries, R&D institutions with 40, 100 gigabit bandwidth,
So we can begin to use broadband to improve education, delivery of health services, because we are not going to be able to provide basic needs the way we have been doing it in the past. Education models are going to be very different. Children today do not learn the same way they learned in the past. I don't need teacher to create content and deliver content. I have best of the best experts creating content. I can get content differently. I need internal motivation. Similarly, I need broadband to solve food distribution, governance, delivery of public services. I see IT as an enabler, even to improve railways. To do all of these things, we need to think out of the box. We need innovations. The procedures of the past, left behind by British Raj, are of no good to us. We need to re-engineer processes, redesign systems, look at technology as enabler, and really focus on young talent. I worry at times when I find our young thinking like their parents. We need lot many more rebellions. We need people to question. We need people to participate in the mainstream. I want young people to be in politics. I want young people to be in science and technology. I want young people to be in business. And I want young people to solve problems of the poor. World over, best brains are busy solving problems of the rich, who really don't have problems to solve. India has the best talent in the world in our young. We have the largest number of poor, and I believe we have moral responsibility to solve the problems of the poor. And we can do it. So we need to really redefine agriculture, education, sanitation. We need to create new models which are affordable, scalable, not just for India, but for the world. I'm confident that with focus on democratization of information, with focus on new technology like biotech, nanotech, materials, genetics, new technology in agriculture, new technology in health, we will be able to solve all these problems very differently than the Western world is solving. But for us to do these things, we need strong government support. We also need strong governments. We can't have this confusion in the government. I am learning that the coalition government slows things down for us. Too many people have too many different ideas on how to do things. And in the process, we are losing time. And we are not serving the poor as well as we should be serving. We need strong government, great faith in our people, and we need Gandhian model. I am a great believer in Gandhian model of development. M.S. Mashelkar has written a great deal about it. He says we need to learn to do more with less. To me, Gandhian model implied truth and absolute truth. Trust, love for all human beings, unconditional love, concern for poor minorities, self-reliance, sense of sacrifice, simplicity. All of these are very interesting, very simple ideas. But how many people practice it? I have said that you could be very modern and be very Gandhian. You could be a technologist and believing in fundamentals. The world today needs Gandhian ideas, because the way world is, with all the complexity of financial services, fiasco,
all of the concerns in Western world. We need new model of development. And I believe India can provide to the world new model of development. But we need to put our house in order. We can't be talking about solving problems of the world if we can't solve our own problems. I find that you don't need talent in India to identify problems. All you need to do is go stay for 10 minutes on the street and you will know what the challenges are in India. So you don't need talent to identify problems, nor do you need a lot of talents to suggest solutions. A lot of the solutions are known. You need courage in men and women to go solve these problems at local level against all the odds. We have old bureaucratic bottlenecks. We do have corruption. We do have confusion. But in spite of all this, we need young people to solve problems at local level. We need people to work in blocks and districts, in villages and towns, and not worry about what happens in Delhi and big cities. The problems and challenges really lie in rural India. We need to improve their quality of life, their income. The idea behind growth is not to create more billionaires or make rich rich or rich richer. We really need to look at equity. At the National Knowledge Commission, we looked at all education, science and technology needs, and we found that the challenge is expansion, excellence and equity. I believe I am taking more time. I get the signal. I wish I had more time. I know you have other programs, but I don't get a chance to address a large group like this. So I probably got carried away just looking at the audience. Maybe some other time we can spend more time. I'm delighted to have this opportunity. I got to cut short, which I don't like, but I'll do it. It is good to see lots of friends on the dais. I can see Nandita. And I wish you all great luck and hope that next time I get more time to chat with you. Thank you, everybody. पुण्यामध्ये आलेल्या सर्व भारताच्या विविध प्रांतातून व विविध नगरातून आलेले सर्व नवयुवकांना हात जोडून नमस्कार. आज मंच पर हमारे साथ भारत के क्रांतिकारी खेल मंत्री अजय माकन जी, उसी प्रकार से मंच पर सुशोभित हमारे महाराष्ट्र के उच्च शिक्षा मंत्री राजेश टोपे जी और खेल मंत्री बलवीर साहब जी, और इस मंच के ऊपर सुशोभित अभी आए हुए सांसद यक्षी जी, नंदिता बोस जी, दास जी, उसी प्रकार से यूके से आए हुए हमारे मित्र लियाम बर्न्स जी और राहुल जी, मंगेश जी और हमारे सबके आश्रयदाते पुणे शहर के विवेकानंद विश्वनाथ कराड़ जी। आज का दिन बड़ा सौभाग्यपूर्ण है पुणे शहर के लिए कि जहां पे भारत के सभी युवक आने वाली राजकीय और सामाजिक विचार गोष्ठी पे विचार करेंगे और एक भारत को नया संदेश देंगे कि हम भारत के नवयुवक हमारी भारत माता की रक्षा और सुरक्षा और सामाजिक एकता कैसी रखनी है उसके बारे में विचार गोष्ठी करेंगे। हमें हमेशा भारत के बारे में, भारत के नवयुवकों के बारे में, भारत की सामाजिक और राजकीय दशा के बारे में विचार करना चाहिए। इस सभा मंडप को विवेकानंद का नाम दिया गया है। हमें विवेकानंद के विचार और पंडित नेहरू जी की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज,
ये पढ़ना बहुत जरूरी है, जिससे हमें भारतवर्ष का पूरा जड़न घड़न, ग्रामीण विभाग, शहरी विभाग का पता लगेगा कि भारत के राजकीय और सामाजिक परिस्थिति क्या है। बस यही संदेश देना चाहता हूं और आने वाले समय में हम सब मिलके शहर की, राज्य की, देश की उन्नति के लिए प्रार्थना करें। सब नवयुवकों को प्रार्थना करता हूं, आने वाले समय में आपके ऊपर भारत की बागडोर है। आप सबको शुभ चिंतित करता हूं पुणे शहरवासियों की तरफ से। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। परम पूजनीय भारत माता, इस द्वितीय भारतीय छात्र संसद को पधारे सभी गणमान्य अतिथिगण तथा मेरे सामने जो युवा नेता जनसागर के समान आए हैं, वो सभी युवा नेता, अनिरुद्ध दिलीप भिड़े का सादर प्रणाम। मैं आज इस मंच पर खड़े हुए एक आनंद की अनुभूति कर रहा हूं, एक विशेष आनंद की अनुभूति कर रहा हूं और गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं कि आज हमारा देश, जो सारे विश्व में सबसे बड़ा जनतंत्र होने से ये है, उसका सबसे बड़ा जनतंत्र होने का वो मान मिलता है, उसके सारे युवा नेता आज मेरे सामने यहां बैठे हैं और हमारे जनतंत्र को सशक्त करने के लिए यहां पर उपस्थित हैं। इतनी शक्ति, इतनी साहस युवाओं में होता है। युवा पीढ़ी मित्रों, ये देश का भविष्य होती है और इतिहास साक्षी है कि जब जब युवाओं ने किसी भी कार्य को हाथ में लिया है, उसे सफलता की ऊंचाइयों तक लेकर गए हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण हम सभी ने अभी अभी देखा है अन्ना जी के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में। अन्ना जी का आंदोलन यशस्वी होने में जितना उनका और उनके विचारों का श्रेय था, उतना ही उनके आंदोलन को मिले युवाओं के जबरदस्त समर्थन का भी था। ऐसी अद्भुत शक्ति, साहस तथा उत्साह युवाओं में होता है। अगर युवाओं ने कुछ ठान लिया तो व्यवस्था परिवर्तन या सत्ता परिवर्तन होते देर नहीं लगती। ये हमने इजिप्ट में भी देखा है, सोशल नेटवर्किंग के जोर पर। मित्रों, आज विश्व पर चारों ओर से विनाश के बादल उमड़ आए हैं। अमेरिका तथा कई पश्चिमी देशों में आर्थिक संकट अपने चरम सीमा पर है। हाल ही में हुए G20 देशों के सम्मेलन में तो इसकी गूंज अधिक तीव्रता से सुनाई दी थी। वॉल स्ट्रीट हो या फिर लंदन, रोम हो या फिर एथेंस, चारों ओर से लोग अपने गुस्से का प्रदर्शन कर रहे हैं। परिस्थिति बहुत विकट है मित्रों, और भारत को ही इस परिस्थिति से, सारे विश्व को भारत को ही निकालना है। हमारा ही यह दायित्व है युवा देश के नाते। और ये कैसे होगा? तो ये होगा जब हम हमारे भारत का अपने स्वत्व के आधार पर निर्माण करेंगे, अपनी भाषा, संस्कृति, इतिहास, कला, ज्ञान, विज्ञान के आधार पर अपने भारत का निर्माण करेंगे। और इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हम इस संख्या में इस द्वितीय भारतीय छात्र संसद में उपस्थित हैं। सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कि कैसे हम विविध क्षेत्रों में युवा नेतृत्व प्रदान कर सकेंगे, राजनीतिक क्षेत्रों में कैसे युवा नेतृत्व प्रदान कर सकेंगे, विकास के बलबूते पर कैसे राजनीति कर पाएंगे, पर्यावरण के क्षेत्र में कैसे हम नेतृत्व प्रदान कर सकेंगे। हमें ऐसे युवा नेता पर्यावरण के क्षेत्र में चाहिए जो दूरदृष्टि रखें, जो 100 साल, अगले 200 साल तक का विचार करे और आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ, एक अच्छा पर्यावरण, एक संतुलित पर्यावरण दे। हमें यह भी देखना है मित्रों कि आज जो हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में और महानगरों में जो खाई है, वो हमें भरनी है। इसके लिए हमें अच्छे सामाजिक नेता चाहिए जो हम यहां से देंगे। यह हमें यहां नेतृत्व प्रदान करना है और यहीं से यह नेतृत्व आएगा, यह हमें अभी समझना होगा। आज इस भारतीय छात्र संसद से एक गूंज जानी चाहिए, इस मंडप से एक गूंज जानी चाहिए पूरे देश में कि आज हमारा युवा तैयार है सारे विश्व की चुनौतियों को संभालने के लिए। यह आज संदेश जाना चाहिए। और यह कैसे होगा? जब हम स्वयं को सशक्त करेंगे, और स्वयं को सशक्त तब करेंगे जब हम स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श पर चलेंगे, अध्यात्म के आदर्श पर चलेंगे।
तो आइए मित्रों, आज इस संकल्प करें, आज यहां पर एक संकल्प करें कि हम सब एकत्रित आए, एक देश को युवा नेतृत्व प्रदान करें और यहीं से हमारे भारत मां का विजय रथ, प्रगति के रथ पर सवार कर विश्व गुरुपद के सिंहासन पर आरूढ़ करें। जय हिंद। Honorable Minister from Government of India, Ministers from Government of Maharashtra, dignitaries on the dais, I am really very happy to see this sea of the youth power of India, the student of India, the leaders of India, which is going to take this country to the top of the world in the next 10 years. We heard the earlier speakers who said, today, IT is known as Indian talent, and it's not talent in physical force alone, 55 crore youth, but also in its intelligence and its thinking power, and they are outshining all the countries in the world, alumni of many good institutes like MIT, and I'm sure this youth power of India will do wonders in future in the right way. I can see a slogan here, inspiring youth for strengthening democracy. So in a democratic way, this youth power will take the country ahead. The organizers have put two beautiful statues, Mahatma Gandhi on your right and Gautam Buddha on your left. They inspire us and they inspire you to take the country in the right way. And when I'm talking about progress of the country, Honorable Minister from Government of India is here. The public sector banks cannot be left away in supporting the youth, the student power in their endeavor to take this country ahead. And on behalf of Bank of Maharashtra, a public sector bank owned by Government of India, I assure that the bank would continue to support them in their education, in building the nation, in savings, and in taking the country prosperously. I once again, on behalf of Bank of Maharashtra, convey best regards to this seminar today. Thank you. Respected dignitaries on the dais, all the special guests who have come for the event, and all the wonderful young people who have so patiently sat through this whole event. तो हिंदी में बोलना चाहिए, अंग्रेजी में बोलना चाहिए, मराठी में, गुजराती में, उड़िया में, बंगला में, आपने कहा है 10 भाषाओं में फिल्में की हैं, तो कुछ तो सभी भाषा में आता है, क्योंकि हमारे देश में इतनी भाषाएं हैं और जब भी नेशनल लेवल पे कुछ होता है तो ये बहुत बड़ा डिलेमा होता है कि किस भाषा में बोला जाए. सो आई एम गोइंग टू स्पीक इन अ खिचड़ी भाषा because the idea is to reach out. First of all, I have to thank the organizers, the founder, for inviting me here. क्योंकि एक तो जब मैं आ रही थी तो मुझे लगा कि ना मैं पॉलिटिशियन हूँ, ना मैं सरकार में हूँ, ना किसी बड़े ओहदे पे हूँ, तो मुझे क्यों बुलाया जा रहा है. लेकिन जब मैं डायस पे आई तो मुझे लगा कि और कुछ नहीं तो मैं कम से कम महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक ही महिला हूँ आपके पूरे डायस पे. So the 50% of audience, I hope there are lots of women leaders here. Do you want to raise your hands, all the women leaders? Okay, lots of them. तो शुरुआत तो इसीलिए आई, मतलब जब मैंने ये सोचा, फिर मुझे लगा कि यहाँ मैं जितना सीखी हूँ, मैं खुद जितना इंस्पायर हुई हूँ, so I think it has been completely worth my time and I hope I can share some thoughts जो शायद उसमें से कुछ आप भी घर ले जाना चाहें. मेरे पास कोई लंबा चौड़ा मैसेज नहीं है, सिर्फ अपने डिलेमाज जो सबको सुन के जो लगा वो सब है. मैं आप ही की तरह सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती हूँ. हम लोग पॉलिटिशियंस को कैसे देखते हैं हम सबको पता है, क्यों नाराज रहते हैं हम सबको पता है. गुस्ताखी माफ यहाँ जो सारे पॉलिटिशियंस हैं, बट आई थिंक दे आर यूज्ड टू इट. दे आर यूज्ड टू लॉट्स ऑफ brickbats and also people running after them. That's the dichotomy that we live in.
But I don't think you need to be great politicians to just to change the color of politics. That is a byproduct probably of it. जो सैम पिट्रोडा जी ने कहा that to think of the lowest rung of the pyramid, the 400 millions who are below poverty, all those people who are marginalized. हम लोगों को यहाँ आकर एक प्लेटफॉर्म मिलता है बोलने का, सुनने का, शेयर करने का, ये अपने आप में कितना बड़ा प्रिविलेज है। ऐसे कई लोग हैं जिनकी आवाज़ यहाँ तक नहीं पहुँचती है। तो मेरे ख्याल से आप लोग जो ग्रेट लीडर्स बनने वाले हैं, वो उनकी आवाज़ अगर यहाँ तक लाएं या ऐसे मंचों तक लाएं, तो उससे बढ़िया बात क्या होगी? Which is what we call giving a voice to the voiceless. अब ये सारी बातें भी हो सकती हैं, सब लोग बोलते हैं हाँ लंबी चौड़ी बातें हम लोग सब करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं। हाउ डू वी सस्टेन आवर इंस्पिरेशन? जब अच्छी सी कहानी किसी की सुनते हैं, जब आर.के. लक्ष्मण जी को देखते हैं, जब देखते हैं कि अभी भी उन्होंने इतनी खूबसूरत अपना एक कॉमन मैन 90 उम्र के ज़्यादा होने के बावजूद जो बनाया, जब हम सोचते हैं कि इन्होंने क्वाइटली, साइलेंटली इतने सालों तक एक अखबार के ज़रिए कॉमन मैन को सेंटर पे रखा, कॉमन मैन की आवाज़ बनकर हम सब तक पहुंच पाए। सो हाउ डज दिस हैपन? व्हाई डज इट हैपन? हाउ डू दीज ग्रेट पीपल कीप देयर कन्विक्शन? हाउ डू दे कंटिन्यू टू डू गुड वर्क? व्हाई डू दे केयर फॉर अदर्स? और जब भी मैं ये सोचती हूँ तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो करेज उस कन्विक्शन से आता है। आजकल जब हम मिलके बैठते हैं और सोचते हैं कि ऐसा क्या है जिसके लिए हम अपनी जान दे सकते हैं, पता नहीं, बहुत सोचना पड़ेगा। अच्छा, जान दे सकते हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं है जिसके लिए जान दे सकते हैं, अपने लिए जान दे सकते हैं। अब तो ये माहौल हो गया है दैट आई मी माई सेल्फ, वी इंक्रीज इट अ लिटिल बिट, ओके आई एंड माई फैमिली, वी इंक्रीज अ लिटिल बिट, मेरे ज़्यादा और रिश्तेदार, दोस्त, वसुधैव कुटुंबकम जैसी बातें कि पूरी दुनिया मेरा परिवार है, ये एक सपना सा लगता है। बट whenever I've interacted with young people, मैं कई कॉलेजेस में जाती हूँ, छोटी छोटी जगहों जाती हूँ, वहाँ देखती हूँ कि अब भी बहुत आइडियलिज्म है। ऐसा नहीं है कि लोग दूसरों के बारे में नहीं सोचते, ऐसा नहीं है कि सभी सोचते हैं अपने बारे में ही सिर्फ। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में थी, हम लोग सफदर हाशमी का एक ग्रुप था, आप लोगों ने शायद नाम सुना हो, वो नुक्कड़ नाटक करते थे। तो जननाट्य मंच नाम का एक ग्रुप था, उसमें मैं पार्टिसिपेट करती थी और एक तरह से वो मेरी पहली पॉलिटिकल ट्रेनिंग थी। मेरे पिताजी पेंटर हैं, माँ राइटर हैं, तो घर में किताबों का और पेंटिंग, डांस, म्यूज़िक, इस सब का तो माहौल था, लेकिन पॉलिटिक्स क्या है या उससे कैसे जुड़ा जाए, समझा जाए, वो मुझे ज़्यादा पता नहीं था। ज़्यादातर लोग पॉलिटिक्स को कई बार पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ते हैं, समझते हैं अच्छा इफ़ यू आर पॉलिटिकल तो समझते हैं कि अच्छा शायद इसका मतलब आपका किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन है, लेकिन हर चीज़ पॉलिटिक्स है। वाटर की पॉलिटिक्स है, जेंडर की पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स की पॉलिटिक्स है, एनवायरनमेंट की पॉलिटिक्स है। तो कई बार जब लोग बोलते हैं कि भाई आई एम वेरी ए पॉलिटिकल, तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है पता नहीं, क्योंकि अगर आप ए पॉलिटिकल हैं इसका मतलब आपको किसी चीज़ से कोई वास्ता नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? which means you don't care about anything. I don't think that's possible. So at some level we all are political or ought to be political, and for that my first training was at Jannatya Manch. हम लोग सब्जेक्ट्स लेते थे जैसे औरतों की समस्याएं हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, एजुकेशन है, इस तरह की चीज़ों को लेकर लोगों के बीच जाते थे, नाटक करते थे और एक चादर फैलाते थे, उसमें जो वो पैसे देते थे उससे फिर दूसरा नाटक करते थे। और लोग जिस तरह से जुड़ जाते थे, जिस तरह के सवाल पूछते थे, मुझे याद है मैंने एक दहेज पे एक नाटक किया था जिसमें ऑरेंज रंग की रिबन्स थी जो आग बन के मेरे चारों तरफ होती थी, एंड आई वाज द विक्टिम ऑफ डाउरी। तो वो नाटक करने के बाद औरतें रोने लगती थीं, कई बार 50 रुपए जो उनके लिए बहुत तब कीमती होता था, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट लेट 80s, और पैसे दे देते थे और आके पूछते थे कि बेटे तुम ठीक तो हो ना। तो मुझे लगता था ये लोग समझ नहीं पा रहे क्या ये नाटक है, तो ये मुझे आके क्यों ऐसे छू रहे हैं जैसे मुझे कुछ हुआ है, इनको ये रिबन्स नहीं दिखी क्या? लेकिन मेरे लिए वो डाउरी, डेथ्स और वो केसेस चौथे पन्ने पे एक छोटा सा न्यूज़ आइटम था, क्योंकि मेरे चारों तरफ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। बुरा ज़रूर लगता था, लेकिन ऐसा कुछ जो कहीं दूर कुछ और लोगों के साथ होता है ऐसा लगता था। लेकिन इन लोगों के साथ, क्योंकि ये उनके घर की कहानी थी, उनकी बेटी की कहानी थी, बहन की कहानी थी, दे कुड रियली कनेक्ट विथ इट। तो तब लगा कि ये शायद ये एक अलग सच्चाई है जो मुझे नहीं पता, और तब लगता था इन नाटक से हम दुनिया बदल सकते हैं।
तो वो आइडियलिज्म शायद आज भी बरकरार है, लेकिन थोड़ा सा रियलिस्टिक हो गया है। सिर्फ उसमें ये बात आ गई है कि हम सारे उस सागर के एक एक छोटे छोटे बिंदु हैं, तो वो बिंदु, हर बूंद जो है वो बूंद अगर नहीं कंट्रीब्यूट करेगी तो सागर नहीं बजेगा। अभी मान लीजिए यहाँ पर गदर जी हमारे सामने बैठे हैं, जिनको मैंने 2004 में सुना था, ये शायद भूल गए होंगे, मैं नहीं भूल सकती हूँ। अनंतपुर में 10,000 औरतों का एक जमघट लगा था और मैं वहाँ बोल रही थी, एक एक लाइन तेलुगु में ट्रांसलेट हो रही थी, और किसी भी शब्द से ज्यादा पावरफुल था इनके पैर में घुंघरू और ये जो गा रहे थे, और लोग पगला रहे थे बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने अपने गाने के थ्रू किस तरह का रेवोल्यूशन, दिमाग का रेवोल्यूशन, दिल का रेवोल्यूशन ये लाए हैं। तो ऐसे जब कई लोग जब इंस्पायर करते हैं, जब कई लोग दिल को छू जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो आइडियलिज्म जरूरी है। लेकिन अगर हम सब सोचें कि हम वो एक बूंद हैं जो अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमसे ना तो दुनिया बदलने वाली है, लेकिन हमारे बिना भी दुनिया कम जल्दी बदलने वाली है। We need to feel a sense of urgency. I'm glad you all feel that urgency. चाहे हम एजुकेशन की बात करें, वाटर की बात करें, एड्स की बात करें, इतने कॉन्फ्रेंसेस होते हैं कि कई बार हम सिनिकल हो जाते हैं। मैं भी कई जगह जाके बात जब करती हूँ तो मुझे लगता है क्या फ़ायदा ये सब बात करके, लेकिन 10 अमेजिंग लोगों से मिलती हूँ जो सच में काम कर रहे हैं, चुपचाप अपना लगे हुए हैं काम पे, तो लगता है कि इनको तो कोई ये कैमरा वाले नहीं है, कुछ नहीं है, वो अपना काम किए जा रहे हैं। उनको पता है कि उनका वो एक बूंद कहीं ना कहीं किसी को काम आएगा, कि जहां तक अगर हम बोलते ही रहे और कुछ काम नहीं करेंगे तो उतनी जानें तो जा रही हैं। मेल न्यूट्रिशन में इंडिया का नंबर बहुत तेजी से आ रहा है, ग्रोथ रेट तो बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं। सो आई थिंक विद दैट सेंस ऑफ अर्जेंसी जब हम काम करते हैं तो वो बूंद को हम एक्सपैंड करते जाते हैं। अभी अगर यहाँ पर गदर जी ने एक संगीत सुनाया और सबको बहुत अच्छा लगा, लेकिन सबने सोचा अच्छा मैं ताली नहीं भी बजाऊं तो क्या फर्क पड़ेगा, अभी 8,000 लोग हैं, बाकी तो बजा ही रहे हैं ना। पर अगर हर इंसान यहाँ पर यही सोच के ताली ना बजाए तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि उनका गाना आप सबको अच्छा लगा कि नहीं। तो हर ताली जैसे जरूरी है, वैसे मेरे ख्याल से हर बूंद जरूरी है, और हम सब का कन्विक्शन जरूरी है। जब कन्विक्शन होगा तो अपने आप करेज आएगा। आपको कोई 10 बार थप्पड़ मारे, अगर आपका नाम पूछे तो आप अपना नाम वही बताएंगे। अभी मैं नंदिता और कल कुछ और, परसों कुछ और, या 10 बार मारने से कुछ और तो नहीं बताऊंगी। जिस कन्विक्शन से हमें अपना नाम पता है, उस कन्विक्शन से अगर हम दुनिया के बारे में, समाज के बारे में, सबके बारे में, अपने बारे में केयर करेंगे तो आई थिंक बदलाव आएगा। मेरा एक छोटा सा बच्चा है, अभी 17 महीने का है, उसको छोड़ के आई हूँ, इसलिए आप सबसे अपने थोड़ी सी जो बात कह रही हूँ उसके बाद भाग जाऊंगी, तो ये मत समझिएगा कि जिनका नहीं सुना उनको कोई यू नो आई एम नॉट बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल, बट आई हैव अ स्मॉल लिटिल चाइल्ड। और जब मैं उसको देखती हूँ तो एक माँ के नाते प्यार तो होता है, और अपने बच्चे से एक अलग पूरी जिंदगी मेरी हो गई है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा लगता है कि मैं अपने बच्चे के लिए कितनी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचती हूँ, और वो कंसर्न कई बच्चों को मिल ही नहीं पाता है। सो इन अ वे योर हार्ट गोज आउट फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन हु विल नेवर हैव दैट एनवायरनमेंट, हु विल नेवर हैव द कंसर्न दैट आई हैव फॉर माई चाइल्ड। सो आई थिंक इफ ईच वन ऑफ अस कैन डू जस्ट आवर लिटिल बिट, हम सबको सोशल वर्कर बनने की जरूरत नहीं है, हम सब बहुत ऊपर तक शायद नहीं भी जा पाएंगे, पर it doesn't matter. If we want a better world, if I want a better world for just my child, I can only have it if I make the world around him better. अगर मैं उसको एक सेफ दुनिया दूंगी, उसके लिए काम करूंगी, a greener world, a more empathetic world, a more sensitive world, तो automatically वो खुश रहेगा। हम अपने चाहने वालों के लिए सिर्फ खुशी चाहते हैं। I'm sure that's what you would want for all your loved ones. And for us to be happy, the only way we can do it is by speaking out, by feeling strongly about what we believe in, by having strong convictions, by having that courage, by following our dream. One day I remember when I was speaking like this to young people, and I said, follow your dream, you must believe in your passion. One young girl got up and said, but ma'am, I don't know what is my passion. I don't know what is my dream. And it was really a wake-up call. क्योंकि ना हमारे घर में, ना हमारे स्कूलों में, कहीं भी हमें वो आज़ादी नहीं मिलती है कि हम अपने पैशन को परस्यू करें। एक के बाद एक क्लास बस पास करते जाते हैं और
कॉलेज आ जाता है 14 साल की उम्र में, वी हैव टू डिसाइड वेदर आई वांट टू डू मैथ्स और साइंस और आर्ट्स, वी हैव टू डिसाइड आवर स्ट्रीम, एंड बिफोर वी नो वी हैव टू अर्न एंड life has already passed us by. So I think this is the time. College in some ways is still the time to find your passion, to find your voice, to be a leader, because most people by nature prefer to be followers. They have enough work to do. So I think if we have leaders like you, and we can truly make that difference. गांधी जी का नाम हर अच्छे ओकेजन पे लिया जाता है. 2 अक्टूबर को हम उनको निकाल के रख देते हैं बाहर और फिर पोंछ के वापस रख देते हैं. बट ट्रूली ही इज अ गाइड. उन्होंने जो कहा था, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, दैट इज माय मंत्रा. जब भी मैं अपने कामों में उलझ जाती हूँ और मुझे लगता है और किसी चीज़ के लिए काम नहीं है, तब मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि अगर बेहतर दुनिया चाहिए तो हमें वो बूंद बनते रहना पड़ेगा. So with that, and a lovely quote that I always like of Martin Luther King, where he says, in our times we will repent, not for the evil deeds of the bad, but for the silences of the good. So I just tell all of you, I request all of you, do continue to question and keep your voice loud. Thank you. First of all, let me thank you for inviting me to such a beautiful country. It really is appreciated. But I have a small request first, if you may. I would like everyone to stand up. Yep, everyone stand up. What I'd like you to do is to shake the hand to the person to your right. Just shake their hand. And then turn and shake the person to your left. Why don't you reach behind you? Shake the person behind you as well. You have just met some of the future leaders of India, if not the world. And that is the feeling I get being part of this event. And you can sit down again. But you started your trip here today with a promise. An idea that started small at the back of your mind. But over time, that idea grew. It grew arms when you realized just how unjust a situation was. It grew legs when you realized it didn't have to be that way. It festered and it burrowed, and until you thought, I'm going to do something about it. Maybe it's a small issue, maybe it's large. Maybe at your university, you want there to be more recycling. Or maybe you want to fundamentally change the way that India treats sustainability. Perhaps you think there should be more people at your college from rural villages and from poorest backgrounds. Or maybe you think that you should completely eliminate the caste system from admissions to universities. Perhaps it's something as complex as stopping bullying at school. Or perhaps it's something as simple as world peace. My point is, you're here because you're interested in public life. You see an injustice, a wrong that could be made right. In short, you've made a promise to change. Collectivism is the value that my organisation is built upon. It's about taking that individual promise that you have and turning it into a national movement. Student officers, students' unions, and the National Union of Students do exactly that. And if you'd allow me, I'd like to tell you how and why. The National Union of Students in the UK was established in 1922. Today, we work for over 600 student unions, and we represent over 7 million students across the UK. Our mission is to promote, defend, and extend student rights and to champion strong and active student unions. We are proudly a campaigning organisation, overtly political, but not party political. Our student officers are democratically elected by and from the student body. We are run by students and for students, and they are my boss. And therein lies the power of the student movement.
strong, vibrant and democratic student unions. Yes, we campaign hard, and we've had huge wins in the past. We've made multinational banks U-turn on charging interest rates to graduates. We've stopped governments from charging students tuition fees, and we've won millions of pounds into the pockets of students. But that is not why I'm so passionate about the student movement and about initiatives like the Indian Student Parliament. The reason I believe our movement is so powerful is because it delivers on a promise to take individuals who care passionately about education, a better society, a better world, and it turns them into active citizens, leaders who win change. I can't think of a better purpose to serve, and I can't see a better articulation of that aspiration than you people here today before me, and I think you should be very, very proud of that achievement. I want to turn to the serious issues that face students, not just in India, but in the UK. We know that education itself is transformative. It is the engine room of social mobility and fundamentally can change people's lives. We also know that education, especially higher education, is accessed by too few, and too few from the poorest background. Successive governments in the UK have peddled the lie that higher education is some sort of burden on taxpayers. We know that it is nothing of the sort. It is in fact an investment that changes people's lives for the better and returns an economic value to our treasury. I can see from the resolutions that you passed last year, when the Indian Student Parliament said that you want to increase the level of education to rural villages. We share a common promise. And the cliché that students today will be the ones to solve the problems of tomorrow has never been more true in regards to environmental issues, sustainability, and the ethical practice of multinational corporations. Our students work on those issues day in and day out, and I see again from the resolutions that you passed at the last Indian Student Parliament for every single student in India to plant a tree to stop environmental erosion. We share a common promise. But sometimes the issues we face on campus fall into insignificance compared to the damage we inflict on ourselves through ignorance and intolerance. Just weeks ago, students in the UK mourned the passing of Anuj Bidvi, a student from Pune who was studying in the UK. He was taken from us by an attack during the holidays. The presidents of the student unions in Lancaster, where Anuj studied, wanted me to pass on my sincere condolences for that act. It gives me no pride in knowing that such an act is possible in my own country, but the sad truth is that intolerance exists in every corner of the globe, whether it is acts that we commit as individuals or acts that our governments inflict on their actions through Parliament. But it is our generation that can say we are tired. We are tired of the intolerance that leads to violence and war. We're tired of being told that underrepresentation of women in our society is a simple fact that can't be challenged. And we will fight for equality and tolerance in our society. As student union leaders, we share a common purpose. And that brings me back to the roots of NUS. We were created out of the ashes of the First World War. Students far wiser than I said that if we can get leaders together today, then we can avoid trouble tomorrow. And that is absolutely right. And so, returning to our roots, in the 90th anniversary of the National Union of Students, we plan a Global Leaders Summit. We plan to discuss, debate, and plan action to access quality education, the sustainability of our environment, and celebrating diversity across the globe. Not only that, we will celebrate the creation of Peace Day, a day where across the world all conflict is ended, and we will work with an organisation called Peace One Day to deliver that. So with that,
And with this memorandum of understanding, I would like to invite Mr. Karad to arrange for students from this Indian Student Parliament to travel to London in September of this year, to agree with fellow student leaders how we can work for a better education. I see this as the first act as a strong partnership between students in the UK and students in India, and it's a partnership I'm keen to build over the coming years. So, Mr. Karad, if you'd accept our offer. And so there it is. That is just a glimpse of the promises that drive students and student unions in the UK. We have much in common, and we in the UK have much to learn from you as student leaders in India, and hopefully there is something that we can share with you. Thank you for the opportunity to speak today. It is no exaggeration to say that what I've seen in my short time with the Indian Student Parliament represents an incredibly exciting movement for change. Using the policy discussions that you have tomorrow as a foundation for a campaigning organisation to right the wrongs of tomorrow. I hope you realise that all 10,000 of you represent the promise of a generation, and that is incredibly exciting. I wish you a very successful conference, a safe journey home, and by the time that you do get home, I want you to answer this one simple question. What is your promise? Thank you. छात्र संसद से प्रेरणा लेकर धनंजय ठाकरे ने ये पुस्तक लिखी है। धनंजय सामाजिक और पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं और महाराष्ट्र के बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट से आते हैं।